Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Batta Fast. This has been a delayed episode, or episode heavy to conduct the final rites of Pakistan's 2023 World Cup, जहां कल 27 घंटे पहले जब जॉसथन बटलर ने टॉस जीत ली थी तो उसी वक्त खत्म हो चुकी थी, या आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक दफा जब न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी थी। बट खैर, हम सब किसी न किसी लेवल ऑफ उम्मीद पे जुड़े हुए थे, और बहुत जल्दी वो उम्मीदें तबाह हो गई। उस्मान, जस्ट ओवरऑल, नाउ दैट पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, क्या तासुरात हैं आपके? Yeah, Pakistan ki campaign, I'm going to keep it very short and simple. Pakistan's campaign is like my internet today. Outdated, very slow, and just given to totally inconsistent results. So आप लोग जो बैठ के वैसी गालियां बकते हैं हमें हमारे इंटरनेट कनेक्शन पे, वो इस बार एक्चुअली जिस थर्ड वर्ल्ड में मैं रह रहा हूँ ये वहां की इशू है। और अहमर आज एकदम फर्स्ट वर्ल्ड कंडीशंस में, अहमर टुडे इज द इंडिया, Australia, South Africa, and New Zealand of this World Cup, whereas I am the Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, and I'm not going to say Afghanistan, Netherlands, because they were actually better than the other three Definitely, teams. definitely. So Um, yeah, that is my assessment of this campaign. तो हमारा इरादा है कि वर्ल्ड कप के ऊपर एक रिव्यू जरूर करेंगे, मगर आई थिंक आज वाले में कल के मैच पे मुझे ज्यादा गुफ्तगू करने का दिल नहीं है, तो हम पाकिस्तान की ओवरऑल टूर्नामेंट पे भी बात कर सकते हैं। और हस्बे मामूल मेरे पास एक एनालॉजी है जो मैं पेश करना चाहूंगा। यू Can नो we कि can we आप introduce these can we introduce these analogies with a drum roll in future? अहमर कुछ करो इसके बारे में, कोई एक ड्रम रोल होना चाहिए। Pum. अच्छा, अब ये भी मैं कहता चलूं कि उस्मान ने जैसा कि जिक्र किया उनका इंटरनेट काफी खराब है, तो जो लोगों को ये सदमा होता है हमारी लाइव स्ट्रीम से, प्लीज जस्ट वेट एन आवर एंड आई अपलोड द रिकॉर्डिंग, और कोई मसला नहीं है। तो कमेंट्स में जो भी लोग हैं, बाकियों जो कंप्लेन कर रहे हैं, उनको प्लीज इस तरफ इशारा दे दीजिएगा। है, so let's get to the analogy. The first, you have a friend, एंड उनकी काफी मुश्किल जिंदगी रही है पिछले 10-12 साल। पैसों के बड़े मसले थे, नौकरी वोकरी के मसले थे, घर वर छोड़ना पड़ा था, और लव लाइफ वाज जस्ट हॉरिबल, लाइक वन साइडेड लव, हार्ट ब्रेक, कोई सीन नहीं। And then all of out of the blue, your friend starts dating like a celebrity, like an actual celebrity who's like hot, who's glamorous, and who's good for your friend, right? Like who's definitely, is nice to them, likes them, whatever. And आप सब लोग बड़े खुश हैं, वाह यार ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मैं तो कोई उम्मीद नहीं थी। शुरू शुरू में अब आपके दोस्त, ऑब्वियसली इतना ही, और सेलिब्रिटीज में ऊपर उठना बैठना, इवेंट्स जाना, ये वो, सो यू कैन सी योर फ्रेंड इज गेटिंग वेरी एंग्शियस, सेल्फ कॉन्शियस, लो सेल्फ एस्टीम, ये वो, बट यू लाइक चलो, होपफुली दे जस्ट गेट यूज्ड टू इट। फिर आपने भी नोटिस करना शुरू किया कि योर फ्रेंड इज लाइक निग्लेक्टिंग नौकरी, दोस्त, फैमिली वगैरह, कुछ सब कुछ इसी पे प्रायोरिटाइज किया हुआ है। पर आपने कहा ठीक है, होता है सीरियस रिलेशनशिप्स में। 2-3 साल बाद आपको जब सबसे बड़ा मसला है कि द सेलिब्रिटी काइंड लाइक कि भाई ये सीन ऐसे ही चल रहा है, मुझे कमिटमेंट सीरियस वीरियस नहीं होना है, और दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड यू कैन टेल कि आपके दोस्त पे बड़ी holding them back. It's really really bad for them, even though this is the best person they've ever dated, but it's a low bar. बट आपको पता है कि अगर अपने दोस्त से बोलेंगे भाई इससे ब्रेकअप कर लो, तो बी लाइक, आर यू क्रेजी, यू एक्सपेक्टिंग मी टू ब्रेकअप विद अ सेलिब्रिटी who's like the best person I've ever dated? Are you mad? तो इस सिचुएशन में आपके दोस्त इस पाकिस्तान क्रिकेट, और द सेलिब्रिटी इज बाबर आजम्स कैप्टनसी स्लैश बैटिंग। कि कैप्टनसी में चलो हम तफसील में बात करेंगे, बट उसकी बैटिंग इज, ही इज द बेस्ट बैटर पाकिस्तान हैड इन 40 years, राइट? ये एक सेकंड ही एक सेकंड एक सेकंड ये अहमर आपकी एक एनालॉजी थी, या इज दिस लाइक सम काइंड ऑफ पर्सनल प्रोजेक्शन स्लैश फैंटेसी ऑफ योर फ्यूचर विद दीपिका पाडुकोन? ये चल रहा है, क्या चल रहा है? हम फिर आपको कहेंगे कि यार अहमर, दीपिका तुम्हारे बहुत बुरी है, तुम छोड़ दो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे ऊपर क्या बदल आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसी चीज की प्रैक्टिस हो गई है ना, कि मतलब यहाँ पे भी कि भाई जो बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए किया है, वो पाकिस्तान के लिए और किसी ने नहीं किया,
राइट? पाकिस्तान हैड टेरिबल लक दैट वे। तो वही वर्ल्ड कप में सेंचुरी बना दी, विनिंग सेंचुरी चेज में, जो उस जमाने में इतनी कोई बड़ी बात नहीं रही थी बाकी दुनिया के लिए, बट हमारे लिए मतलब हमने जिंदगी में पहली दफा ये देखा है एक वर्ल्ड क्लास बैटर नंबर वन हो रहा है, उसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये दिन हमने कभी देखे भी नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं। बट अभी आप निकाल लें अगर बाबर आजम की स्ट्राइक रेट जो इस वर्ल्ड कप में amongst like I think Virat has a surprisingly low strike rate, which is at 88. Everyone else is like easily 90 plus top batters. Babar at 82 is the only people lower than her are Labuschagne and then like the Afghan batters, right? So ये मतलब जिम्बाबर जो आप वो कहते हैं जो कुछ भी, देयर ऑलवेज बिन एस्पेक्ट्स ऑफ इट। जिस दिन से बाबर आया था उसी वक्त से पाकिस्तान के लिए वो द मोस्ट मॉडर्न बैटिंग वी एवर सीन, बट ही वाज ऑलरेडी मॉडर्न बैटिंग उस वक्त तक बदल चुकी, राइट? और जब तक मतलब अगर बाबर आजम 2016 में आता है तो 2015 के वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स ने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि मुस्तकबिल क्या है। बट बाबर वाज कमिंग एज अ मॉडल ऑफ द लास्ट एरा फॉर द न्यू एरा। और मतलब सिर्फ बाबर पे मैं नहीं फोकस कर रहा कि ये पाकिस्तान की बैटिंग का एक ओवरऑल इशू है इस टूर्नामेंट में। आई थिंक बॉलिंग भी बहुत खराब थी, इट्स प्रॉब्ली वर्स देन द बैटिंग इफ यू लुक एट द नंबर्स, बट that might be a cyclical issue, or it doesn't feel like ये इतनी बड़ी issue, but batting has always been an issue. But now even with Babar, in many ways the best you've ever had, you still have the same issues. Yeah, I think बाबर के साथ एक दो इशू हैं। एक तो इट्स हिज कैप्टनसी ऑब्वियसली, एक उसकी बैटिंग अंडर हिज कैप्टनसी। आई थिंक जो एक जो उसकी आप क्या कह सकते हैं यार, लाइक आई डोंट लाइक बीइंग दैट हार्श ऑन कैप्टनसी, बिकॉज एक तो कैप्टनसी आपको there's this modern debate of how important really is a captain in a cricket side. I think that's more geared towards T20s, less the longer the format goes, because T20 में आपकी वैसे ही एक fortune और luck की ऐसी एक impact होती है। कैप्टनसी में बाबर, आई थिंक लाइक इसमें जो क्लियर सेंस आया इस टूर्नामेंट में इज दैट ही लैक्स अ सेंस, एक गेम सेंस होता है ना कि यार इस वक्त ये प्रेशर हमें लगाना है, ये करना है, इस वक्त यानी हमें चेस पे वी हैव टू डबल डाउन। एक मैं प्राइम एग्जांपल दूं जो बाबर की, खुद बाबर के अपने लफ्जों से जो एक प्राइम एग्जांपल ऑफ हिज कंजर्वेटिज्म वाज दैट लवली इंटरव्यू अदरवाइज दैट हिम एंड फखर डिड आफ्टर द न्यूजीलैंड गेम। उसमें फखर बोल रहा है कि वो खुद कहता है, फखर कहता है कि आप बताओ आप मुझे क्या कह रहे थे जब मैं छक्के मार रहा था। And there were multiple times where Fakhr did not hit one six, he hit three in a row, or three off and over, two off and over. और जब भी वो पहला छक्का मार रहा था तो बाबर उसे कह रहा था कि यार अच्छा अब थोड़ा इजी हो जाओ, सिंगल विंगल निकालो, हमारी रेट रहेगी। ये खुद दोनों एडमिट कर रहे हैं और बड़े हंसी मजाक में के माहौल में वो लोग एडमिट कर रहे हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली द मोस्ट रिवीलिंग थिंग अबाउट बाबर। एंड अगर आप बाबर की डिसमिसल्स देखें इस टूर्नामेंट में, पुलिंग टू मिड विकेट, not entirely committed to going over the top, which modern batters do that now. आपकी थोड़ी सी भी लेंथ में आप अर्न करें ना तो you go over the top over mid wicket, or not entirely committed to playing it along the floor. He's kind of got halfway between attacking and being conservative or whatever, and he's paid for it. He's been dismissed I think 4 times in that short mid wicket region, all of deliveries जो आप किसी top batter को देखें, and I'm not saying that Babar is not a top batter, but if you look at a top batter in the world right now, he would put those deliveries away for a boundary minimum. मैं तो कह रहा हूँ कि छक्का वक्का लग जाएंगे, but he would put them away for a boundary minimum. तो I think वो जो एक Babar is stuck between, I think, what his game can be and what he thinks his game should be as captain, as more responsible or something. यार आप फखर जमान जब इतने छक्के मार रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा सिंगल विंगल ले लो, you cannot do that. 400 You have to go with the flow in the modern game कि यार वो छक्के मार रहा है, उसके पास ability है, he's riding this, he's on top of the bowlers at this moment, he has to cash in. बाद में देखा जाएगा, बाद में हमारे पास, you have to have confidence in your batters who are coming in after you, which is the other issue that I don't think Babar के पास वो confidence है, despite the middle order actually being better than they have been for the last 3 years. I don't think अभी भी वो confidence बाबर के अंदर translate हुआ है। I think बिल्कुल the crazy thing is जिस मैच की बात हो रही है तो उसमें ना ही सिर्फ कि अच्छा फखर छक्के मारा जो कुछ भी, आप 400 रन चेस कर रहे हो, like It's a it's small not matter of
like there's all else aside, you literally need 8 and over. तो मतलब आपको एटलीस्ट 2 चौके हर ओवर मारने हैं. तो ये ऐसा मैच है ही नहीं जिसमें आप कहें कि यार अच्छा अब इजी हो जाओ, हम रेट हाँ. कंट्रोल में एक्स वाई दैट. एंड एंड आई थिंक कि यहाँ पे मतलब मैं यही कर रहा हूँ, और मैं आप देखने वालों से इल्तिजा करूंगा कि आप ये गलती ना करें. लाइक इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट जो बाबर की इश्यूज हैं विद द लार्जर टीम, एंड विद दिस लाइक जहाँ उसकी बैटिंग की वर्ल्ड व्यू है वो उसकी कैप्टनसी के साथ भी इशू आता है. और यहाँ पे it's not just on Babar, but since he is the guy who is setting the tone and setting the way, it does mean कि आप एक limited है, but at the end of the day also कि once you take Fakhr out and Iftikhar also, कि वो spinners के खिलाफ बिल्कुल फंस जाता है, pacers को मार सकता था. You take Fakhr out, you really don't have anyone जो उस किस्म की बैटिंग कर सकता है while also being a reliable batter. Like छक्के छक्के तो लोग घुमा देते हैं, but जो रन बना सके. और वहां पे like maybe in the future generation will be better, etc. But this is a big issue. We'll come back to Yeah, Babar. The second thing is I just want to add one point to this. You see the best example of this, very very short point. Our best example, dekho, is Ishuka. Like I know India has every advantage going for them in this tournament, not least that they have like 7 or 8 of the world's best players in their side. But if you look at जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपनी गेम चेंज करी है over the last year or so, very very obviously, very publicly, उसने अपनी गेम चेंज करी कि यार हमारे पास इतने बैटर्स अब आ गए हैं that I can just go hard at the top. I can stop being the old school anchor that half of the Pakistani team is right now. जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है वो ओल्ड स्कूल रोहित शर्मा टाइप गेम है कि आप पावर प्ले में हल्का खेलें और फिर आप बिल्ड करें and then you can go large. He's changed that around and I think the benefits are there. I mean, India was a good team before anyway, and arguably they'd be in the semi-finals even with the old Rohit approach. But he's willing to take that risk to go harder, to give up the idea कि आपको यार लंबा खेलना है. वो आपको पावर प्ले में गेम तोड़ के दे देता है. So that's I'm not saying that Babar has to definitely be like that, but he can take something from जो उसने अपनी approach change करी है रोहित ने. That is the kind of thing that you have to look at if you're going to be like a modern, up-to-date white ball side, basically. particularly क्योंकि आपके पास रिजवान टीम में है who is also your keeper. तो वो तो वैसे ही हर हाल में टीम में होगा. And so and Babar is infinitely more talented than Rizwan or really anyone else. तो उस तरीके में मतलब वही आई थिंक कि वहां पे उसकी सोच उसको पीछे वही रोक देती है, क्योंकि फिर ना ही वो उसकी बैटिंग में दिखाई देता, ना ही आप उसको कप्तानी में दिखाई देता है कि यार मॉडर्न क्रिकेट इस तरीके से नहीं खेली जाती. खैर, वी विल कम बैक टू बाबर. द सेकंड टॉपिक जो आपके दिल के बहुत करीब है उस्मान, और आई थिंक इट वाज फॉर मी जो इतनी गौर से नहीं फॉलो कर रहा होता शायद क्रिकेट पिछले कुछ सालों में, मेरे लिए तो काफी हैरानी थी कि पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप और इन एनी फॉर्मेट just not having a proper spinner. मतलब क्या शादाब जैसे कि टूर्नामेंट के शुरू में हम कह रहे थे इज प्रोबेबली एट बेस्ट अ सेकंड स्पिनर, बट उसके बियॉन्ड लाइक आई नो हमने अबरार को नहीं खिलाया एक्सेट्रा, बट ऑल्सो if Abrar had played well, it would have been a big surprise rather than a very obvious tactical move. वो बहुत ही inexperienced खिलाड़ी है. और जैसा कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं और टीमों में भी नजर आ रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको 4 ओवर कराने की आदत है. तो ऐसा नहीं है कि वो फिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट जस्ट द मतलब कि एक 500 लफ्ज का मजमून लिखना और एक 2,500 या 3,000 लफ्ज का लिखना में काफी फर्क होता है. इट्स लाइक दैट, लाइक ट्रांसलेटिंग टू अ लॉन्गर फॉर्मेट रिक्वायर्स कि आप किस तरीके से स्पेल कर रहे हैं, किस तरीके से अटैक्स अपना अपना अटैक कर रहे हैं, किस तरीके से बॉलर को बैटर को सेटअप कर रहे हैं, वो सब बदल जाता है. और वहां पे बहुत सारे बॉलर्स में इस वर्ल्ड कप में आई फेल्ट आपको दिखाई दिया कि उनके पास इतने आइडियाज नहीं थे कि अब हम 10 ओवर की स्पेल के साथ क्या करें. पाकिस्तान की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग का एक ये भी मसला था, बट अदरवाइज दे वर जस्ट टेरिबल. लाइक द फास्ट बॉलिंग वाज आल्सो क्वाइट पुअर एट द स्टार्ट particularly, but as the tournament progressed they're expensive, but they were picking up, but yeah, like they weren't like, oh ye kya ho gaya hai. But with spin bowling, like, is there a crisis? Yeah.
100% इज अ क्राइसिस। ये काफी दिनों से बिल्ड हो रही है। लाइक आपके पास एक क्वालिटी वाइट बॉल स्पिनर सईद अजमल के बाद से कोई आया है पाकिस्तान में? लाइक एक क्वालिटी फ्रंट लाइन स्पेशलिस्ट वाइट बॉल स्पिनर अजमल के बाद कोई नहीं आया पाकिस्तान में। दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लॉन्ग टर्म मैक्रो फैक्टर्स एट डोमेस्टिक लेवल एंड आल्सो माइक्रो फैक्टर्स। आपके पास मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कितनी बार कहा हूं, आई गेट बोर्ड ऑफ माई सेल्फ सेइंग इट, मगर 2016 में दैट्स 7 years ago नाउ, मिकी आर्थर हैड आइडेंटिफाइड अबरार अहमद एज पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर्स में। 2016 में सिर्फ 2 साल हुए थे या 1 साल हुआ था फ्रॉम द एंड ऑफ सईद अजमल ओडीआई करियर। ठीक है, सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके बाद आपको एक अबरार अहमद जैसा बॉलर मिला था, कराची किंग्स में था उस वक्त वो, पीएसएल में, जिसे मिकी आर्थर ने आइडेंटिफाई कर दिया था कि यार ये एक बॉलर है जो हमें डेवलप करना है। आई नो उसकी बीच में इंजरीज हुई हैं, काफी बुरी इंजरीज हुई हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द बैक हुआ है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर वही कोच जो अब वापस आया है डायरेक्टर क्रिकेट, दिस इज लाइक एक ये भी इसमें फ्रस्ट्रेशन है पूरे कैंपेन में, दैट इट्स दिस शुड हैव बीन द क्लोजर ऑफ द 2019 में जो प्रॉमिस और जो प्रोग्रेस हुई थी पाकिस्तान की, इसमें और फिर आगे बढ़ना था आपको, बिकॉज आपका कोर भी सेम था, आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट effectively a head coach was also the same, and they really should have been building towards something more. उस वक्त आपने अबरार अहमद को आइडेंटिफाई करा है, उस वक्त से लेके अब तक अबरार अहमद आपका वेट ही कर रहा है टू रियली ब्रेक इनटू द साइड, और आप में बीच में और कोई स्पिनर नहीं आए। उसामा मीर भी इज इनएक्सपीरियंस, आई थिंक उसामा का ठीक ठाक एक्सपीरियंस आई थिंक डोमेस्टिक पे है, लेकिन इट्स नॉट लाइक यू परसिस्टेड विद हिम। पाकिस्तान ने ट्राई करा है स्पिनर्स, उस्मान कादिर and Usama Mir, I guess now there's not that many that they've been able to try also. शादाब की स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी मुझे आई गेस एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट लगी, एंड वी स्पोकन अबाउट इट, आप अगर देखें यार, अहमद शादाब फ्रॉम डेब्यू आईसीसी इवेंट 2017 से 2019 से 2023, दैट्स 350 ओवर आईसीसी इवेंट्स ही इज प्लेड नाउ, 3 like big campaigns he's kind of grown up through, right? मगर उसकी bowling sadly has not just not evolved, I feel like it's regressed from like 2017 progressively. वो 2017 में एक स्टैंडर्ड पे थी where he was like a wicket taker. वो बॉलर था आपका, एक मेन फ्रंटलाइन स्पिनर था आपका, गूगली थी उसकी, टर्न थी उसकी, स्पिन थी। उसके बाद से 2019 में he was becoming more of an all-rounder, मगर फिर भी वो बॉलिंग करा लेता था, like he was doing pretty okay. I remember इंग्लैंड के खिलाफ उसने की विकेट्स लिए हैं उस मैच में ट्रेंट ब्रिज पे, and he was smart. 2023 में he's, I don't know yaar, he's been like, maybe injuries have played a part, maybe his role has played a part, but he has lost the ability to bowl 10 over spells. वो आप कह रहे थे पहले, you were saying that you get used to bowling 4 overs, and it's also a muscle memory thing. It's a muscle memory thing that if you're used to bowling और overs आप करा रहे हैं तो आपकी bowling उसी तरह से बेहतर होती है, but Shadab somehow he just hasn't progressed, which is really worrying for Pakistan कि आपके पास एक once in a generation, I still say it, he's a once in a generation, 3 skilled, like multi-skilled white ball player आपका है शादाब। बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग उसकी इंप्रूव हुई है, फील्डिंग में he's still the best fielder Pakistan ever produced, और बॉलर था, लेकिन आपने 6 साल में 7 साल में he's actually regressed in that format, and कुछ तो सवाल उस पे उठेंगे कि why haven't you been able to develop, और obviously कुछ सवाल जिस environment में वो खेलता है पाकिस्तान में, वैसे ही linear progress upwards किसी भी इदारे में, किसी भी फील्ड में वैसे ही मुश्किल है, it's complicated, लेकिन that question has to be asked after this World Cup कि why has Shadab not progressed the way he should have been after like winning a goddamn ICC tournament in his very first tournament and being a crucial part of it. तो आई थिंक कि मतलब जिस पिछली जो गुफ्तगू थी जहाँ पे बाबर इन अ सेंस रिप्रेजेंट करता है लार्जर आपके बैटिंग के इश्यूज जो रहे हैं, क्योंकि अगेन आप बाबर को हटा भी दें तो ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे बिग हिटर्स हैं जो टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जो कुछ भी, मतलब बाय एंड लार्ज ही इमाम या ये जो नए क्रॉप आ रही है, लाइक who've played who've actually come away from this tournament with their reputations enhanced rather than जो आपका ज़्यादा established top order था, but उसी तरीके से शादाब भी एक तरीके से आपका सिंबल बन चुका है ऑफ स्पिन बॉलिंग इश्यूज, राइट? बिकॉज लाइक अगर आप वो पहली 1-2 पीएसएल्स देखें तो हर टीम के पास एक इमर्जिंग स्पिनर था। देयर वाज दैट लेफ्ट आर्म स्पिनर फॉर पेशावर, असगर समथिंग आई थिंक, Asghar, Mohammad Asghar.
असगर, मोहम्मद या असगर। फिर आपके पास obviously you had Abrar, you had Osama Mir आप playing, and या then you had like Zafar Gohar tha, or उस्मान even on उस्मान that कादिर himself। उस्मान कादिर लाहौर के था, तो मतलब आपके पास हर फ्रेंचाइज में एक दो यंगिश स्पिनर्स थे जो डेवलप हो रहे थे। तो शादाब ऑब्वियसली वाज द मोस्ट इम्पैक्टफुल स्ट्रेट अवे। मगर वही है कि अभी मतलब वही पिछले 6-7 साल में, जबकि फास्ट बॉलिंग में काफी ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं कि अभी जितनी इंजरीज के बावजूद भी there was plenty of players who could have taken Hassan Ali's place, for example, right? Like um, all kinds of issues with it notwithstanding. But I think spin bowling में सबसे बड़ा मसला यही है कि आप अगर ठीक है शादाब और सामा को नहीं खिलाते ये वो, तो आप किसको खिला रहे हो? And as you pointed out कि like I'm personally shocked कि अबरार को इतने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, but I remember वो हैरी पॉटर मीम्स और ये सब कुछ जो उस वक्त आ रहे थे, and yeah, he's been around that long। और वहां पे अगेन लाइक आई थिंक एंड लाइक बैटिंग से ज्यादा इन अ सेंस वरिंग यही है, क्योंकि spin bowling, you could argue, especially in the 21st century, yeah, maybe longer, Pakistan ki has not only been just as important as the fast bowling, but at the same time, probably Pakistan has दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स बहुत कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं, राइट? तो उस बैकड्रॉप में ये देखना कि आपके पास कोई भी प्लेयर्स नहीं हैं जो ओडीआई क्रिकेट के लिए सूटेबल हों, इस वर्ल्ड कप में भी नहीं थे और आगे जाके भी नहीं पता चल रहा है, इज बड़ी शॉकिंग। बट we're going to go to the third topic now, which like I think जो pressing issues on this World Cup, क्योंकि जिस तरीके से बाबर की बैटिंग ने एक बड़ा लो बार, पाकिस्तानी बैटिंग बाबर एक लो बार क्लियर कर रहा था, this PCB administration was trying to clear a very high bar of PCB incompetence, and like spectacular. I feel मैं यही सोच रहा था कि जितने अरसे से मैं सहाफत क्रिकेट की कर रहा हूँ उस लेवल पे कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि बोर्ड में क्या हो रहा है। I which is not that many years, but it's multiple, I don't know, 8-9 regimes. I think this is, from what I understand, is one of the most toxic situations within the board, and it had been getting worse for the past couple of years। उसी के साथ साथ एक टूर्नामेंट के दौरान इस लेवल की हमाकतें कि आपने मतलब मैं ये सोच रहा था कि जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस में भी शायद सबसे बड़ा कि बाबर आजम की मैसेजेस लाइव नेशनल टीवी पे लीक किए गए हैं वाया द गाय दैट द चेयरमैन इज स्पीकिंग टू, सो यू आर अज्यूमिंग इट्स कमिंग फ्रॉम हिम। उसका लार्जर पर्पस क्या था? वाज इट टू लाइक प्रूव दैट द लाइक इंडिया इज sabotaging the World Cup? Was it to prove that कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला था? Was it to prove that there's like fixers involved? No, it was to prove that Rashid Latif's claim about Babar Azam's phone calls was incorrect. That was what was at stake in the middle of a World Cup, which Pakistan is having a disastrous moment in। मतलब और उस कि ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली वो इंटरव्यू है, द प्रेस रिलीज माइट vie to be man of the player of the tournament rather than the league text। But so this was जो आप जब आपको आप अपने मामू या चाचा या खाला के साथ बैठे हुए होते हैं या फुप्पो के साथ आप बैठे हुए होते हैं ना, और उन्हें क्रिकेट में वो कैजुअल लेवल पासिंग इंटरेस्ट है जो आधी कौम को होता है, आधे से ज्यादा कौम को होता है, और एंड दे इक्वेटेड टू दे इक्वेटेड टू सियासत, टू पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स चल रही होती है ना, कि यार वो तो सिर्फ अपने पैसे बनाने आए हैं और ये करने आए हैं, वो करना है, नवाज शरीफ तो सिर्फ अपने पैसे बनाने वापस आया है, इमरान खान एक था मगर जरदारी भी वैसा है। This board is that conversation but applied to cricket। तो क्रिकेट में भी लोग कहते हैं ना कि यार इजाज भट्ट और नसीम अशरफ ये लोग भी सिर्फ अपने पैसे ही बनाने आए थे, अपने फायदे के लिए आए थे। With Zaka Ashraf's administration, and I say this with utmost due respect of having covered Pakistani cricket administration since 2002, I think pretty much, I say this with some sense of what I'm saying, कि जितना personal driven, personal profit and agenda driven, and I don't mean कि पैसा सिर्फ, पैसा might be the least of it, but जितना आपने अपनी personal uplift और अपनी personal enhancement
स्टेचर एनहांसमेंट के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है ना अभी, आई हैव नॉट सीन दैट लेवल. मैं कहता हूँ इजाज बट, मरहूम इजाज बट भी, जो भी थे, जो भी उनकी खामियां थी, जो गलतियां थी, जो ब्लंडर्स थे, उनका ये कभी नहीं था कि यार मैं आया हूं इस बोर्ड में टू एंजॉय माई लाइफ. ही डिडंट हैव दैट. ही genuinely believed कि मैं जो कर रहा हूं, वो जितनी भी एक delusional thinking थी, and delulu is the selulu is my new favorite phrase, as you know, Ahmad. जितनी भी वो एक थी ना delusion कि मैं बेहतर करने आया हूं, he was not there to profit and benefit himself. And that's, for most part, the only other person who was like this. I mean, I can barely think of others who are like this. Zaka Ashraf की जो भी administration है, उसमें हर जो बंदा है ना, they are looking out purely for themselves. और ये, this is like the most ruthless form of a PCB administration that I've seen, in which literally आप senior official से बात कर रहे हैं, आप mid level official से बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं जो बोर्ड, जिन्होंने बोर्ड को अभी रिसेंटली छोड़ा है या बोर्ड को रिसेंटली ज्वाइन करा है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, हर बंदा इस वक्त, and I know I'm sounding like your mamu and your WhatsApp forward and this and that. I'm telling you, every board, every person in that board right now is out to ensure their future or their stake in the board or prolong their career. सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉटम लाइन जो भी एक एजेंडा चल रहा है, वो ये है कि इस बोर्ड को बस चलाओ किसी तरह से, हम अपनी पोजीशन में 3 महीना और खींच लें. 3 महीना खींचने, इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस में हमारी कोई गवर्नमेंट आ जाएगी और फिर हम होम फ्री इजी फील हो गए. That literally, this is the most ruthlessly self-interested and self-involved board administration that I have seen, I don't know, ever, really. So it's terrible. It's terrible. It's terrible. And इसमें it's, I think, उसके हर जो एविडेंस है ना, वो आपने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है. या आई थिंक कि एक जब ये बोर्ड शेनानिगन्स अपनी उरूज पे थे तो एक आई थिंक, और मैंने शायद पिछली एक किस्त में भी इस बात पे की थी कि लोग कह रहे थे कि पीसीबी इज द न्यू पीआईए एटसेट्रा, एंड यू नो आई वाज आर्गुइंग विद पीपल के, एंड मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम ये कॉन्टेक्स्ट दे दें, क्योंकि जैसे कि उस्मान ने कहा कि ये अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज द क्लीशे कम टू लाइफ, राइट? सो एवरीवन हु वाज ऑलवेज लाइक कि अरे ये सब बिके हुए हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, राइट नाउ यू नो दिस इज ट्रू. जिस कॉन्टेक्स्ट में, अगर इसमें ये भी बहुत अहम है कि पीसीबी बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स काफी एक वेल रनिंग इदारा है, और उसमें यही भी, मे बी वी कैन डू एन एपिसोड ऑन दिस सम टाइम, बिकॉज आपकी जो एक लेयर होती है जो पॉलिटिकल है, जो चेयरमैन अपॉइंट होता है वजीर आजम के जरिए, and then you've got like a lot of kind of people who work as, you know, the rank and file, and quite a few of them been there for a while, and institutionally, you know, वो क्योंकि ज़्यादा longer running होते हैं, so they're kind of driving that, और उस sense में you know, because cricket को एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करना होता है, तो डिस्पाइट द यूजुअल पाकिस्तानी इश्यूज, पीसीबी को आप तब भी देख सकते हैं कि वो कुछ चीजें कर रहे हैं जो ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं कंपेयर टू अदर इदारे इन पाकिस्तान. दैट बीइंग सेड, आई थिंक द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन क्रेजी, क्योंकि आपके पास ये वसीम खान और एहसान मानी का डुओ था, एंड उनके कोई मतलब उनके बहुत मसले मसाइल थे, बट उस वक्त काफी अहम लेवल पे चेंजेस आ रहे थे. नंबर वन, विद ब्रॉडकास्टिंग डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट, एंड देन जस्ट डेवलपिंग अ ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हिच इज शोएब नवीद आपको इससे पूरी मजलिस पढ़ देंगे ये क्यों इतना अहम है रेवेन्यू के लिए. और दूसरा कि आपके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जो again pretty controversial changes, but reflecting के cricket जो पुराना structure था, जब आप I don't want to get into it, but it was made under a different economic reality really, versus the, you know, you have to move into the future. तो वो कदम उठा लिया गया था, और उसके सबसे बड़े एडवोकेट पिछले 20-30 साल से इमरान खान थे, जो शेफील्ड शील्ड को देख के ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के लिए 6 डोमेस्टिक टीम्स के सबसे बड़े और शायद अखलौते एडवोकेट थे. That happens, and then Imran himself is the person who changes and brings Rambo in. Rambo, we were having this debate on Paces Pace यार, कि अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चरल लेवल पे, जो हिस्टोरियंस कहते हैं ना कि यार मुगल एम्पायर इसलिए फॉल हुई, रोमन एम्पायर इसलिए फॉल हुई, ये बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज आए थे. आई थिंक नो वन, and I can do again another episode on this, कि Ramiz Raja की 2 tenures have caused massive structural long-term damage to Pakistan cricket. Very quickly, it's the use of pitches that he had and the use of balls in his first regime,
and basically then ignoring the PSL, trying to launch the PJL in his second regime. And obviously the pitches again with the home test series that he was also trying to change things around it. And then you have like Najam and Zaka Ashraf fighting, and then you this is your build up to the World Cup, राइट? तो वो Hmm. दो चीजें सच हो सकती हैं कि यस पाकिस्तान की फजूल इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में पीसीपी इज बेटर रन, but it's still a Pakistan institution. In the last few years, it has been on this horrifying trajectory जो कल्मिनेट हो रही है इस वर्ल्ड कप में। और अगेन मतलब जो उस्मान जिन किस चीज़ों की बात कर रहे हैं कि आपका मीडिया डिपार्टमेंट में there were changes happening as the team goes. A new person comes in, then that person's former colleagues are attacking another person of the media team who is in the World Cup, and that bichara is brought back, replaced by someone else. Like this is the level of politicking going on. Okay, random officials are the subject of conspiracy online and in newsprint. Yeah, Matlab, I will say I'll say one thing. And again I'm going back to my old point. Magar even Rambo's administration, right? बहुत उसमें criticism हुई है और valid criticism हुई है, गलतियां करी हैं, like the pitches was the least of the fiasco, everything, the centralization of power to the chairman, all these things absolutely up for criticism. लेकिन, and I don't know how much of a consolation this is, but it's more of a comparison, I guess. लेकिन Rambo जो भी कर रहा था ना, he at least was doing it from the belief that his methods are the one that are correct. He wasn't doing it कि यार मैं चेयरमैन बनूंगा तो मेरी फर्स्ट क्लास की टिकट यहाँ की होगी और मैं इनके साथ तस्वीरें खिंचवाऊंगा और मैं ये वो अपने फूफा, द पावर ऑफ फूफा जो करते हैं ना, माजिद भट्टी साहब ने मुझे सिखाया था कि यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी एक पावर ऑफ फू होती है कि आपको यानी आपका कुछ भरम है बेसिकली. He wasn't doing it for that. He was doing it because mistakenly, however much, he felt that what I'm doing is going to be better for cricket. ये अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें ये सब कोई सोच है ही नहीं. थोड़ा सा वो लिमिटेड है बिकॉज ऑफ डे टू डे उन्हें रनिंग करनी है. बट यार तुम सोचो अहमद, दिस एडमिनिस्ट्रेशन नाउ हैज टू वर्क टुवर्ड्स, आई डोंट नो इफ दे विल बी अलाउड टू बिकॉज इट्स अ लीगल क्वेश्चन, बिकॉज उनकी ऑपरेशन सिर्फ डे टू डे तक लिमिटेड है. इन्हें ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करने पाकिस्तान क्रिकेट के और पीएसएल के, आई थिंक टिकटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स करने, क्या क्या बड़ी बड़ी डिसीजंस इन्हें करनी है. इन्हें टीम अब डिसाइड करनी है कि भाई कप्तानी के साथ क्या करना है आपको. अभी एक आपकी ऑस्ट्रेलिया की टूर आ रही है जिसपे अगर आप 3-0 नहीं हारे तो आपकी ये बहुत बड़ी जीत होगी. आप अगर नहीं हारते बहुत बड़ी जीत होगी. तो यू नो अभी आपके जो अगले 3-4 महीने ये बहुत ही क्रिटिकल महीने आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. और जो भी प्रोग्रेस आपकी हुई है आफ्टर द पीएसएल विद द नंबर ऑफ प्लेयर्स कमिंग इन, जो थोड़ा आपने एक अच्छा डोमेस्टिक सिस्टम लाया था, जो अगेन इट वाज डिबेटेबल, आप थोड़ा सा उसे बड़ा कर सकते थे, जो इमरान खान की विजन थी 6 फर्स्ट क्लास टीम की, जो कुछ भी आपने उस वक्त करा है ना, यू आर बेसिकली एट द रिस्क ऑफ throwing away all of that over these next 3-4 months in the aftermath of what's happened with this World Cup. And again, हम लोग हंसते हैं कहते हैं, मगर हम एक उस नाजुक मोड़ पे पहुंच चुके हैं फिर से. हमेशा से हम लोग उधर ही अपने घर बनाया हुआ है अपना. It's like a refugee camp for Pakistani cricket at that नाजुक मोड़. basically, like the Nazuk mode is like a circular conveyor belt, right? Like every time you feel you're moving forward, you're actually. मगर अब हम आते हैं अपने चौथे मौजू पे कि ये kind of building stacking up what I feel are like structural issues. क्योंकि आई थिंक इस वर्ल्ड कप में पहले भी ये हम लोग बात कर चुके हैं कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट की जो लिमिटेशंस हैं, जो मसले मसाइल हैं, वो ख़ास तौर पे इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहे थे, राइट? कि जिस तरीके से आपकी बीसीसीआई लेड शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं, उनका क्या इफेक्ट हो रहा है आपकी ग्लोबल इमेज के ऊपर, ग्लोबल रेवेन्यूज के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और वही के मतलब एक हद तक आप ये सारे जो अपने इश्यूज डिस्कस किए इन लोगों को आप इनकी तनकीद कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग आई वांट टू शो और जस्ट रीड आउट आई गेस. बट पिछले वर्ल्ड कप से लेके इस वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान ने 46 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, जिसमें से एक्चुअली जो मेजॉरिटी थी वो इस साल खेले पाकिस्तान ने. आई थिंक दे प्लेड लाइक 16 दिस ईयर. एंड पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा मतलब वी प्लेड द मोस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड व्हिच इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, और वही ज्यादातर इसी साल हुए हैं. मगर उसके बाद फिर आपके सबसे कॉमन अपोनेंट्स आर अफगानिस्तान,
नेदरलैंड्स, आपने नेदरलैंड्स अफगानिस्तान के साथ उतना ही खेला जितना आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, एंड देन यू प्ले a lot against Bangladesh, West Indies, Zimbabwe, etc. You compare that to like the other semi-finalists. तो मिसाल के तौर पे इंडिया played 78 one-days in this time. Hmm. 25 श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, but then 13 against Australia, 11 against New Zealand, 7 against England, 7 against South Africa. Australia ने 55 one-days खेले, but so just 10 more than Pakistan, but they played Hmm. 13 against India, 10 against South Africa, 8 against England. And then England themselves played 54, but again, the most number they played, their most common opponents were South Africa, Australia, India. They're barely playing the sides at the bottom. अब वो मेरे पास इतना Hmm. time नहीं था to make this properly, but essentially ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, we have like a two-tiered system, right? और वो टेस्ट में भी और वनडेज में भी आपको सबसे ज्यादा होता है because you don't have any franchise situation जहाँ पे आपको एक alternative मिल रहा है. तो यहाँ पे आप ठीक है, आप शादाब या बाबर को जितना ही बोलते हैं, बट वो जब खेल ही नहीं रहे, you know, बेहतर टीमों से, और जब वो मतलब again it's one thing to how many matches you're playing in this numbers like that, but it's Hmm. also तो पाकिस्तान तो खेल इस साल में उन्हें जल्दी जल्दी अच्छी टीमों के खिलाफ मैचेस हो गए, but that's not enough time for your core to pick up a lot of experience, to pick up a lot of like forced into difficult situations, etc. And it's definitely not enough time to get new players into it, right? आप मतलब कि पाकिस्तान अगर ये इतने ही मैचेस खेल रहा था, तो क्या अगर शादाब को इंजरी नहीं भी होती और इस ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहा होता, वुड दैट हैव बीन इनफ कि वो तैयार होता है इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे? आई डोंट थिंक सो. वही सवाल आप उठा सकते हैं आपके टॉप ऑर्डर पे कि वो जब नहीं खेल रहे इन टीमों के खिलाफ, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंड यू सी वर्सेस लाइक इन दिस वर्ल्ड कप, India should win it. They've been dominant before, but like their dominance in this World Cup is insane. Like Hmm. averaging 56 per wicket batting and 19 per wicket bowling, and no one is even in the same atmosphere as them. बट वही क्या, आप पाकिस्तान को जब आप वो देख रहे हो, तो वो नॉट जस्ट पाकिस्तान, जब पूरी टेबल देख रहे हो, तो यू वेरी इजीली सी कि यही जो चार टीमें सेमीफाइनल खेल रही हैं, और मे बी with the addition of England's Yeah. everything over the last 4 years, one day is a bit weird. But with the Yeah. other four, it's very clear. Play good teams the most often, they're in the semifinals. Versus, ये बड़ी एक सरसरी लेवल पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें 10 और चीजें हैं कि who's playing, who's not playing. तो आपका Hmm. एक ये हो गया, और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि भाई अफगानिस्तान कौन सा अच्छी टीमों के खिलाफ खेल रहा है. बट वहीं पे आपका आ जाता है कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी क्योंकि आईपीएल खेल रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि उनकी ऐसी नहीं पूरी टीम बहुत गन प्लेयर्स की है, बट नबी, मुजीब, राशिद, the guys who are bona fide franchise Hmm. stars, have that वो game awareness, have that understanding of modern batting, modern bowling, क्योंकि वो साला साल ऐसे कोचेस के साथ खेल रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में आपके franchise stars, definitely none of the batters, and जो हैं, मतलब like maybe you could have expected a little bit more from them, etc. But ultimately इससे बहुत ज्यादा फर्क पहले भी पड़ रहा था और अब और भी ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आई थिंक वही जो शुरू में थोड़ा सा 2017 से 19 इस पीएसएल कोर के जो आपको फायदे मिले थे, आई थिंक नाउ इन वन वेज यू कैन आर्ग्यू कि सबकी डेवलपमेंट रुकी हुई है, क्योंकि वो ना ही प्रीमियर टी20 टूर्नामेंट खेलते हैं, ना ही वो अच्छी टीमों से वनडेज खेलते हैं. तो वो कहाँ डेवलप करेंगे? लाइक वेयर विल दे गो टू दैट Hmm. नेक्स्ट स्टेप? या सबसे एक एक जो there's a couple of things in this. एक तो ये है कि एक जो the other big takeaway from Pakistan's entire campaign, अगर लोग देखते हैं क्रिकेट, पाकिस्तान की भी क्रिकेट देखते हैं और फिर जो इंडिया में क्रिकेट होती है और जो और भी जगह क्रिकेट होती है, या was how much it showed up के and this is not their fault, how much it showed up के पाकिस्तान को इंडिया में नहीं खेलने आता है. Right? Indian या grounds over the last 10 years have become like different beasts. एकदम अलग हो गए. पाकिस्तान ने पिछली बार जो इंडिया में खेला था बायलैटरल सीरीज 2012 में, 2016 में वर्ल्ड टी20 खेला था, लेकिन पिचेस एक तो अलग अलग पिचेस हैं, बहुत सारी, there's a variety of different pitches, but there are some very specific requirements on a lot of these pitches. जैसे बैंगलोर में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान बॉलिंग करा रहा था, साफ जाहिर हो रहा था कि यार ये अच्छे बॉलर्स हैं जिन्हें इस ग्राउंड पे
bowling, they have to feel their way into it because they've never played there before. ये तो एक बहुत काफी बड़ा फर्क आ रहा था, watching Cummins bowl, watching Hazelwood bowl, to watching other guys bowl, के Indian grounds पे there are different requirements. दूसरा जो the bigger point that you made was वर्ल्ड क्रिकेट का जो स्केड्यूल है, टोटल मेस. और इस पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अच्छा, अब जो ओडीआई सुपर लीग थी, जो इस पिछले वर्ल्ड कप और इसके दरमियान जो चल रही थी, मगर वो भी not through its own fault, but because of COVID, that league got wrecked completely. Like the coherence of that league was just blown apart by COVID and the schedules and stuff. लेकिन अब से लेके अगले वर्ल्ड कप 2027 में जो वर्ल्ड कप है, उसमें ओडिया सुपर लीग नहीं होगी. लेकिन इस हफ्ते इंडिया में अहमदाबादी में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग चलेगी. वो हमेशा होती है, हर टूर्नामेंट के बाद होती है, बड़े टूर्नामेंट के बाद, और हमेशा इट्स टाइम यूजुअली 4 मीटिंग होती है साल में बोर्ड की, जिसमें सब मेंबर्स आते हैं. और अब ये नवंबर की आखिरी साल की जो मीटिंग होती है, नवंबर में होती है अमूमन. इसमें डिस्कशंस, द टॉपिक्स अंडर डिस्कशन, अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. श्रीलंका क्रिकेट में जो हो रहा है वो तो एक बहुत बड़ी इशू है, जिसका जो इशू वो चल रही है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की, वो आप पाकिस्तान पे भी अप्लाई कर सकते हैं बाय द वे. लेकिन दैट्स अ सेपरेट हाँ, इशू एक्चुअली आई ऑलटुगेदर. वाज लेकिन शॉक्ड कि it is like you can totally apply that to Pakistan cricket. मगर जो मेन एक जो इशू आनी है ना इस मीटिंग में, and this is completely totally cricket administration, is that 27 to 31 की जो साइकिल है, उसमें अब शायद फिर से ओडीआई सुपर लीग वापस आ जाए. तो ना देयर इज अ सिचुएशन कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बोर्ड्स वांट टू टॉक अबाउट दिस. वो वैसे ही आपकी फ्यूचर ऑफ ओडीआई बातें चल रही हैं, तो वन ऑफ द ऑप्शंस दैट दे माइट लुक एट, बोर्ड्स माइट वांट टू टॉक अबाउट इज कि यार हम ओडीआई सुपर लीग वापस ना ले आए. तो इट्स जस्ट लाइक यार आप करना क्या चाह रहे हैं, बिकॉज आपने अगले वर्ल्ड कप में 14 टीम आपने इंक्लूड करवाई है, जो 10 से ज्यादा 14 टीम आपने करवाई है. उसके लिए फिर आप ओडीआई सुपर लीग वैसे ही नहीं चला सकते हैं, बिकॉज सुपर लीग में 13 टीम थी, उसमें से टॉप 8 क्वालिफाई करती है और फिर अलग अलग क्वालिफायर के थ्रू क्वालिफाई करती है. अब 2027 के वर्ल्ड कप में 14 टीम है, 2031 के वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स होंगी, और आप ओडीआई सुपर लीग को किस तरह से बनाएंगे? एक जो आपने उसे चांस वैसे ही नहीं दी इस साइकिल में, अगली साइकिल के अगली साइकिल पे आप फिर से उसे वापस लाना चाह रहे हैं. जिस तरह से इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को ड्रॉप करी है, वापस लाई है, ड्रॉप करी है, वापस लाई है. ऑफ 2025 टी20 में T20 2025 में कोई गारंटी नहीं है कि जो पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, एक तो वो पाकिस्तान में होगी, और दो कि वो 50 ओवर फॉर्मेट में होगी. कोई गारंटी नहीं है अभी, किसी को कुछ नहीं मालूम है. एंड दैट लाइक आप अपने आप को सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड कहते रहते हैं. आपकी ओलंपिक्स में अब आप शामिल हो गए हैं, ओलंपिक स्पोर्ट में. लेकिन आप जिस तरह से चला रहे हैं ना इस गेम को, उससे लगता है कि आप यार वो जो गली के टूर्नामेंट्स नहीं होते, नॉट इवन लाइक नाइट टूर्नामेंट्स रमजान में जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जो अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आप जो अपने गली में, अपनी और साथ वाली गली में जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे ना, जिसमें 2 ही टीम होती हैं, वही खेलते हैं, अपने आप रूल्स बनाते हैं, ये करते हैं, ये वो चल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पे. ये वो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है. तो हम अभी कह रहे हैं कि यार अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किस तरह से इंप्रूव करेगा. आपके पास आपके जो ओडीआईज हैं बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, यू हार्डली गॉट एनी इन द नेक्स्ट ईयर. आप खुद ही से ऑर्गेनाइज करना है, आपको खुद ही अपनी बायलैटरल स्ट्रेंथ को ऑर्गेनाइज करना है. आईसीसी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग हियर. और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बार चेंज होगी बिटवीन नाउ एंड देन. लाइक यू कैन ऑलरेडी रूल आउट द 2031 वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान. यू कैन ऑलरेडी रूल आउट बिकॉज यू नो हाउ इट्स गोना एंड अप. 2030 और 31 के दरमियान आप 15 ओडीआईज खेल लेंगे, एक उसमें एशिया कप भी आ जाएगा, और हम लोग उस वक्त बैठ के, जिंदगी रही इंशाल्लाह तो ऐसी ही बातें कर रहे होंगे 2031 में, 2027 में, 2031 के लिए हम लोग ऐसी बातें कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ आई क्रिकेट मीन, एंड बिकॉज ऑफ. एंड आई थिंक कि ये, इफ इट्स नॉट ऑब्वियस ऑलरेडी, कि ऐसा नहीं है कि आजकल क्रिकेट की ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है. ये क्रिकेट की हमेशा से यही सीन है. इनफैक्ट मतलब मैं ये सोच रहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी गालियां देते हैं, बट जो द टू ऑफ अस आर जर्नलिस्ट, राइट? लाइक it can be argued that until Crick Info does so, उससे पहले तक, और क्रिक इन्फो के ऊपर क्रिक इंडिया होने के इल्जामात हमेशा से रहेंगे हैं और रहेंगे. बट दैट नॉट विथ स्टैंडिंग, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि क्रिकेट अपने बारे में एक ग्लोबल सतह पे बात कर रहा था. क्योंकि हाँ, आप विजडन की कोई भी 300 साल की कॉपीज उठा लें, तो उसमें
95% इंग्लिश क्रिकेट और उनके मुखालफिन और Hmm. उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बारे में, काउंटी शाउंटी के बारे में होता है, और आई डोंट नो 5% भी बहुत जेनरस है जिसमें वो और क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू करते हैं, विच कैन इंक्लूड वर्ल्ड कप्स एंड मेजर मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स। तो ये कोई 150-200 साल तक तो ये क्रिकेट की कोट एंड कोट बाइबल थी, और इसमें कोई और किसी और पे कोई वो नहीं था। वही रवैया ऑस्ट्रेलिया में भी था कि वो जो भी उनकी Hmm. क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू है वो ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा बहुत इंग्लैंड या एशेज तक महदूद होती। Hmm. तो वो तो हमेशा से यही सोच थी, और फिर उसके बाद एशियंस अपना वो शारजा में खेल खेल के उन्होंने आगे चलाते रहे। ये वो तो एक मतलब हम पाकिस्तान पे हैरान रहते हैं कि ये मुल्क कैसे चल रहा है, तो क्रिकेट भी उसी तरीके का एक नमूना है कि बस चल रहा है किसी कॉलोनियल ट्रॉमास की वजह से या व्हाटएवर। बिकॉज अगेन लाइक अगले वर्ल्ड कप में आप क्या करेंगे, पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं है एक साल। और आई रिमेम्बर 2019 के वर्ल्ड कप में भी, या 15 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसे ही कुछ स्टार्ट आया था कि पाकिस्तान अब अगले 70 साल तक मैच नहीं खेलेगा। और फिर से यही हो रहा है। सो इट्स नॉट इवन लाइक ओ ये एडमिनिस्ट्रेशन या ये बीसीसीआई या ये आईसीसी, ये हर साल वही होता रहता है। एंड यू नो इस टूर्नामेंट में जब हम डिस्कस करेंगे, आई नो वील बी डिस्कसिंग अफगानिस्तान व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू वॉच। बट अफगानिस्तान का भी वही अलमिया एक हद तक रहेगा जो इससे पहले छोटी टीमों का रहा है जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है, कि बहुत मुश्किल होता है उस चीज को सस्टेन करना। अब वही है Hmm. कि अफगान अफगान खिलाड़ियों के लिए एज लॉन्ग एज दे कैन कीप गेटिंग सेलेक्टेड बाय द आईपीएल, दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द ओनली कंपेटिटिव एडवांटेज जो उन्हें मिल सकती है, क्योंकि उनके बोर्ड के जरिए इंटरनेशनल मैचेस उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है। और वही जो उनके एक खिलाड़ी ने फिर इंस्टाग्राम पे भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को जब वैसे बायलैटरल खेलने होते हैं तो उन्हें अपने सारे एथिक्स याद आ जाते हैं कि जी नहीं हम नहीं खेलेंगे तालिबान और Noor, Nabeen. तो हाँ, और वर्ल्ड कप में आप फिर कहते हैं कि अच्छा खेल रहे थे। तो दैट व्हिच इज एग्जैक्टली कि वो ऑस्ट्रेलिया का एहसान है कि वो मुंह खोल के नहीं बोल रहे कि हाँ अब ऐसे ही चलेगा मैच मतलब कि दे आर हाइडिंग बिहाइंड थिंग्स, बट दैट्स रियली व्हाट इट इज कि या विल ओनली प्ले यू व्हेन वी एब्सोल्युटली हैव टू कैरी आउट आवर ओन वर्ल्ड कप प्रोग्रेस, अदरवाइज यू नो यू कैन गो टू हेल। और अभी इस सब बातों में हमने तो द बिग एलिफेंट इन द रूम विच इज सऊदी अरेबिया, हमने ये तो मेंशन ही नहीं करा है। वो किस तरह से इस गेम को चेंज करने वाले हैं वो तो किसी को आइडिया नहीं। I mean, You know, that's it's in a. legit. It's legit I if you think look कि at, पाकिस्तान. yeah, go on, go Sorry, on. go ahead. तो आई वाज सेइंग कि गोल्फ, जब गोल्फ में हुआ है सऊदी इन्वॉल्वमेंट जो भी हुई है, जो एलआईवी उन्होंने सेटअप करा था, नाउ दे टेकन ओवर द रनिंग। गोल्फ में सब जो जर्नलिस्ट थे ना और बहुत सारे प्लेयर्स भी, दे वर ऑफ द सेंस दैट गोल्फ वाज अ स्पोर्ट दैट वाज राइप फॉर अ टेक ओवर। उसकी ऐसी डिस्पैरिट सी फ्रैक्चर्ड सी एडमिनिस्ट्रेशन थी। आपकी यूरोपियन टूर है, आपकी यूएसपीजी है, आपकी एशियन टूर अलग है। दे वर लाइक दिस इज राइप फॉर जस्ट लाइक somebody coming in to take it over. Somebody looks at cricket, and Saudis have looked at cricket, and they're like, hey, you know what? Here's another sport that's ripe for taking over because 160 years down the line, they still haven't sorted their bleep out. अभी भी क्रिकेट वैसे ही चल रही है, कोई और पावर टेकर्स आ गए, चल वैसे ही रहा है, बायलैटरल है, मगर आप उसे ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं। तो सऊदी का जो इंटरेस्ट आया है, सऊदी जो जहां तक हमें थोड़ी बहुत मालूम है, आई एम नॉट, इट्स नॉट 100% वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, बट जहां तक हमें मालूम था वो ये था कि यार सऊदी ने जब शुरू करी कॉन्वर्सेशन क्रिकेट की, उन्होंने एक स्केल लेआउट कर दिया अपनी इन्वॉल्वमेंट का। स्केल के टॉप पे था कि यार हम लोग आके बस वी गोना टेक ओवर एवरीथिंग, वी जस्ट लाइक आईसीसी को मारो गोली, हम अपना सेटअप बना रहे हैं। और स्केल के लोअर एंड पे था कि यार चलो विल इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक द आईपीएल एंड विल बिल्ड अप आवर ओन लीग, विल बिल्ड अप अ ग्लोबल लीग व्हिच वी कैन प्ले अराउंड द ईयर ऑन द कैलेंडर, जिसमें हम इतने पैसे देंगे कि सबको आना पड़ेगा हमारे पास। तो उनका ये नहीं है कि हम वी वोंट टच क्रिकेट और विल टेक इट, दे आर कि हम लोग विल कम इन अ बिग वे व्हिच विल बी दिस लीग एंड एन आईपीएल स्टेक, और वी जस्ट गोना से यार आईसीसी खुदा के वास्ते छोड़ दो, हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास इतने पैसे हैं। एंड दे हैव जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दे वांट इंडिया टू बी they want Saudi Arabia to be the number one tourist destination for Indians and stuff like this. So obviously they're going to do it, and they have money on a scale that nobody in cricket has seen. तो उन्हें
Today it's only a matter of time until they want to just become serious and say कि अच्छा अब हम कर रहे हैं. अभी तो वो थोड़ी छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं. They're like के बस हम चलो अब आ जाते हैं. And then when the day they make that decision, the game is gone. That is gone, as in it's completely changed, and we have a new I, power broker. I mean, I think अगर आप put aside all the moral and political calculation, तो पाकिस्तानी क्रिकेट की के लिए प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा उम्मीद की बात यही है कि अगर सऊदी अरेबिया आ जाए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे कि इंडिया का जो कंट्रोल है और इंडिया की जो पाकिस्तान को साइड लाइनिंग है क्रिकेट में वो टूटी जा सकती है. मतलब कि उसके बावजूद उसके अलावा देयर इज नो अदर वे दैट you can really challenge India and how it wants to run the game. And under the current disposition, India has decided that Pakistan is not going to be part of its plans in a global sense. और उसका इफेक्ट आपको अपने क्रिकेटर्स पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. एंड वही आपकी उम्मीद यही थी कि या तो आप खुद PSL को will never be like you know an equal of the IPL, but it can definitely be something that in terms of its branding and its prestige, as well as some amount its economics, can be a challenge, or at least make your players not lose out too much. Wo bhi, I think wo advantage is now being lost. We haven't really built on the PSL. तो अनलेस अगर सऊदी अरेबिया नहीं आता है तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुस्तकबिल में मुझे तो उम्मीद नहीं दिखाई देती, which is beautiful. You are now in a situation where, like, oh, Saudis, you are our Yeah, only but I hope. also, by the way, I also think कि कोई natural alignment नहीं रही है अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में. कोई ऐसा सीन नहीं है कि Saudis are like कि हाँ हमें we'll have to take Pakistan on board in this. I think वो जो एक natural sense जो पहले एक आपकी थी ना कि हाँ यार हम और सऊदी मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, I think that alignment is gone because Saudi Right. Arabia now is purely about this is the market we want to get. Whether that market is India, whether that market is Germany, whether it's the US, whatever, this is what we want to do. We don't care about old natural alliances. This is what we care about. अगर I mean, पाकिस्तान में benefit, अगर कोई तो benefit क्रिकेट हो में भी पाकिस्तान से, मार्केट. yeah, yeah. So I don't think, basically what I'm saying is I don't think Pakistan can sit back complacently. जो एक जमाने में था जब सऊदी अरेबिया की बातें शुरू हुई थी तो PCB में उस जमाने में नजम सेठी थे. नजम सेठी was fairly confident कि नहीं we're working on something with Saudi, we're about to do something. घंटा कुछ हुआ है उसका, कुछ भी नहीं हुआ है. Like there's nothing there at all. So and आपकी administration change होती रहती है with all this instability. Who is going to make some kind of coherent, concrete effort to reach out to who may be the new overlords of the game? पप्पा. देखिए भाई, वो तो आफ्टर अ लिटिल व्हाइल सऊदी भी कहेंगे कि भाई कौन जनरल है जिससे हमें बात करनी है, और खत्म खत्म करो ये बहस. तो पप्पा ही बात करेंगे सऊदी से भी. बट लाइक या आई थिंक कि एज यू पॉइंटिंग आउट कि शायद पहले पाकिस्तानियों को इतनी डिल्यूजन भी हो कि भाई सऊदी अरब के साथ मिलके हम IPL को तोड़ देंगे ये वो. सो यस, आई थिंक देयर इज नो No, एपेटाइट in Saudi Arab for doing something like that nothing. in alliance with Pakistan. अगर करेंगे भी तो वो अपनी, जैसे कि कहा कि अपनी मार्केट और अपनी इकोनॉमिक व्यू से करेंगे. और वही पाकिस्तान का फायदा है कि देयर इज इनफ ऑफ एन इकोनॉमिक factor there for excluding Pakistan to not be the Yeah, best decision. And yeah, particularly for Saudi Arab, in order to generate quick interest, India Pakistan is the easiest thing to kind of leverage from a marketing perspective. तो वो इस उम्मीद पे हम ठहरे हुए हैं. बट या तो हमने कल के मैच की बिल्कुल भी कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही आई थिंक ना करनी है. जरूरत पड़ी थी किसी को. ना करनी या है. सो वी विल बी डूइंग एपिसोड दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के बाद, और उसके बाद एक वर्ल्ड कप का एक ओवरऑल रिव्यू भी करेंगे. और फिर उस्मान और मैंने एक दूसरे से वादा किया है कि हम कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी हम आपसे बात करते रहें, क्योंकि एज एज आपको भी पता है कि अब पाकिस्तान के पता नहीं जब तक हम सबके बच्चे जवान होंगे तब अगले मैचेस होंगे, तो वैसे बट्टा फास्ट करने की हमारे पास भाई स्पेस कम हो जाएगी. बट हमको Batta fast on the Australian experience is a must. Who will not listen to Batta या fast on the Australian experience?
Yeah, we'll definitely have we have some plans for the future, इस किस्म के. But thank you for listening to us today. Thank you for following the campaign with us. And, क्या कहते हैं कि उस बहुत मायूस किन campaign थी, but we had a lot of fun doing this show. And we'll catch you again with the next episode. So till then, bye bye.